Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Ali from Aspire Group of College, and this is lecture number 2. Student, in the last lecture, we started reading the first lesson, The Dying Sun. In this lecture, we will continue reading from the next paragraph. Please open your book from page number 2. The paragraph is starting from, although we cannot speak with any certainty, it seems most likely that the human race came into existence in some such way as this. Standing on a little grain of sand, we try to discover the nature and purpose of the universe, which stands our home in space and time. Our first feeling is something like fear. स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये बात बताई थी कि बोर्ड वाले पेपर में सेकेंड ईयर की बुक से ट्रांसलेशन नहीं आती है, इसलिए वी हैव टू कंप्रीहेंड द लेसन. हमें ट्रांसलेशन नहीं करनी है, हमें इन्हें समझना है. तो इस पैराग्राफ की पहली लाइंस में वो ये कहता है कि हम यकीन से नहीं कह सकते कि इंसान कैसे वजूद में आए, लेकिन कुछ ऐसा ही लगता है कि इंसान किसी ऐसे ही तरीके से वजूद में आए जिसका राइटर ने पिछले पैराग्राफ में जिक्र किया है. तो राइटर कहता है कि जब हम अपने स्यारे पर खड़े होकर सारी दुनिया के बारे में देखते हैं तो हमारी पहली फीलिंग फेयर की है, डर की है. और ये डर क्या है वो आगे डिस्क्राइब करता है. आगे पढ़ने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स बता रहा हूँ फ्रॉम दिस लाइन. द फर्स्ट वन इज सर्टेनिटी एंड इट्स सिनोनिम्स आर assurance, sureness and conviction. Another word is human race. Mankind and humanity are its similar words. Next word is come into existence and its synonyms are shape up and materialize. Another word is discover and its synonyms are learn, find out, determine and see. Another word is surrounds, encircle, enfolds and envelops are its synonyms. Now I am reading the next line. We find the universe frightening because of its immense distances which we do not understand, frightening because of the stretches of time so great that we cannot imagine them, making the whole of human history so very small in comparison, frightening because of extreme loneliness and because of the littleness of our home in space, a millionth part of a grain of sand out of all the sea sand in the world. But above all else, we find the universe frightening because we cannot find any sign that life like our own exists anywhere in it except on the earth. इन लाइंस में राइटर हमें ये बताता है कि यूनिवर्स फ्राइटनिंग क्यों है. तो सबसे पहले कहता है कि इसके इमेंस डिस्टेंसेस हैं जो हमें फ्राइटन करते हैं, मतलब बहुत लंबे चौड़े फासले, जिसका आइडिया उसने हमें ये दिया था कि इस कायनात में इतने स्टार्स हैं जितने रेत के ज़र्रात हैं और इनके दरमियान लाखों मील का फासला है. दूसरी बात वो हमें ये बताता है कि यूनिवर्स फ्राइटनिंग है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम. स्ट्रेचेस ऑफ टाइम जिसके बारे में उसने हमें ये बताया कि 2,000,000 ईयर्स अगो आ रेयर इवेंट टुक प्लेस. तो इतने सालों पहले की हिस्ट्री हमारे पास नहीं है. ये स्ट्रेचेस ऑफ टाइम भी हमें खौफजदा करते हैं. और इसके बाद उसने ये बताया कि ये कायनात हमारे लिए खौफजदा कर देने वाली है क्योंकि हमारा स्यारा, हमारा घर इसमें बहुत छोटा है, एक रेत के ज़र्रे के बराबर है. ये लिटलनेस हमें खौफजदा करती है जो सारी दुनिया के रेत का लाखवां करोड़वां हिस्सा बनता है. और अबव ऑल एल्स, और इन तमाम चीज़ों से बढ़कर ये कि बाकी स्यारों पर ज़िंदगी नहीं है. तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें खौफजदा करती हैं. इस हिस्से में कुछ मुश्किल वर्ड आए. इनमें से वर्ड है फ्राइटनिंग एंड इट्स सिनोनिम्स आर fearful, horrible, terrible and awful. Another word is stretches and its synonyms are vastness, immensity and extensions. Next word is comparison and its similar words are contrast, relationship and evaluation. This word is evaluation. And the next word is sign and its synonyms are mark, symbol, signal and indication. Now student, I am reading the next lines. Indeed, for the most part, empty space is so cold that life in it would be frozen. Most of the matter in space is so hot
as to make life on it impossible. Life does not seem to have any part in the plan of the universe, which produce our planetary system. Calculation shows that there can be only very few such systems in space. Yet so far as we can see, life of the kind we know on Earth can exist only on planets like the Earth. It needs suitable physical conditions for its appearance, the most important which is a temperature where the substances can exist in a liquid state. यहाँ पर ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है और पैराग्राफ के लास्ट में वो हमें ये बात बताता है कि ऐसा लगता है कि जब इस कायनात को, इस यूनिवर्स को प्लान किया गया तो लाइफ को उसका हिस्सा नहीं बनाया गया। या तो सियारे इतने गर्म हैं कि वहाँ पर जानदार जल जाएं या फिर इतने ठंडे हैं कि वो फ्रीज़ हो जाएं, और इसलिए ऐसा लगता है कि लाइफ का कहीं हिस्सा नहीं रखा गया। ताहम ज़िंदगी पाई जा सकती है सिर्फ उन सियारों पर जहाँ पर टम्परेचर ज़मीन जैसा है, सियारा ज़मीन जैसा है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो रिक्वायर्ड है फिज़िकल अपीयरेंस के लिए वो ऐसा टम्परेचर है जहाँ पर चीज़ें अपनी लिक्विड स्टेट पर रह सकती हों, ना तो इतनी ज़्यादा हरारत हो कि माया चीज़ें वेपोरेट हो जाएं और ना ही इतनी ज़्यादा ठंड हो कि माया चीज़ें जो हैं वो जम जाएं। इस हिस्से में मज़ीद मुश्किल वर्ड्स हैं। फ्रोज़न and its synonyms are cold, ice covered, icy and solid. The next word is plan and its synonyms are strategy, design, scheme and idea. Another word is calculation and its synonyms are computation, estimate and sum. Next word is suitable and its synonyms are proper, appropriate and apposite. Another word is physical and its synonyms are bodily, corporeal, carnal and fleshly. These were the important words from this paragraph and their synonyms. Now students, I am reading the next paragraph. The stars themselves are far too hot for this. We may think of them as a collection of fires scattered through space, providing warmth in surroundings where the temperature is at most some 4 degrees above absolute zero. That is about 484 degrees of frost on the Fahrenheit scale. In the immense stretches of space beyond the Milky Way, it's colder still. Away from the fires, there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. Close up to them, there is temperature of thousands of degrees at which all solids melt, all liquids boil. ये पिछले पैराग्राफ की ही कंटिन्यूटी है कि लाइफ यहाँ पर क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कहते हैं ये स्टार्स को आप ऐसे समझें कि ये कलेक्शन ऑफ फायर है, अगर इनके करीब जाएं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ऐसा टेम्परेचर जो जला दे, और अगर इनसे दूर हटते जाएं तो ये टेम्परेचर कम होता जाता है और इतना कम कि ये डिग्री ऑफ फ्रॉस्ट से भी बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो अगर हम इनसे दूर हटते जाएंगे, इन कहकशाओं से दूर, तो ये अनइमेजिनेबल कोल्ड है, ऐसी सर्दी है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। Some important words from this paragraph. The first one is scattered and its synonyms are spread, sprinkled and strewn. The next word is absolute zero. It means the lowest temperature. The next one is degree of frost. It means the freezing point. The next one is scale and its synonyms are level, balance and measurement. The next word is Milky Way, जिसे हम कहकशां कहते हैं, सितारों का झुरमुट, collection of stars and constellation. The next word is unimaginable, unimaginable, unthinkable, undreamed of. The next word is melt, that is dissolve, liquefy, thaw and flux. Now student, I am reading the last paragraph of the lesson. Life can exist only in a narrow belt surrounding each of these fires at a certain distance, where the temperature is neither too hot nor too cold. Outside these belts, life would be frozen, inside it would be burnt up. A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible, all added together, make up less than 1,000 millionth part of the whole of space. And even inside them, life must be very rare, for it is extremely unusual for suns
to throw off planets as our sun has done. Probably only one star in one leg has a planet going round it at the right distance for life to be possible on it. इस लास्ट पैराग्राफ में राइटर हमें ये बात बताता है, एक इमेजिनरी बेल्ट के बारे में बताता है, एक इमेजिनरी एरिया के बारे में बताता है कि जहाँ पर टेम्परेचर इस लाइक है कि वहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। और ये इमेजिनरी बेल्ट क्या है कि ये गर्म सितारों से इतना दूर का एरिया कि जहाँ पर उनकी गर्माइश ना हो, और ठंडे सितारों से इतना दूर कि जहाँ पर उनकी ठंडक ना हो। लेकिन फिर वो खुद ही कहता है कि इस इमेजिनरी एरिया को, इस बेल्ट को हम इकट्ठा नहीं कर सकते और वहाँ पर ऐसा प्लानिटरी सिस्टम नहीं बना सकते जैसा हमारे सितारे पर है। तो कहता है अगर आप स्टडी करें तो हो सकता है कि आप 1,00,000 स्टार को स्टडी करें और उसके बाद कहीं कोई एक स्टार आपको ऐसा मिले जो किसी ऐसे डिस्टेंस पर है जहाँ पर लाइफ पाई जा सकती हो। From this last paragraph, the important words are, first one, narrow, and its synonyms are limited, restricted, contracted. The next one is belt, girdle, binding, restrained, and line are its synonym. Next word is certain, sure, firm, definite, and convinced are its synonyms. The next word is rough, coarse, unrefined, and crude are its synonym. Next word is unusual, rare, uncommon, scarce, and strange are its synonyms. Strange. The last word is probably, and its synonyms are perhaps, possibly, and undoubtedly. स्टूडेंट, ये था सारा लेसन। आपको याद होगा कि जहाँ जहाँ ऐसे क्वेश्चंस बनते रहे जो एक्सरसाइज में नहीं है, वो क्वेश्चन मैंने आपको साथ साथ बताए। इस लास्ट पैराग्राफ में भी एक क्वेश्चन बनता है, एंड दैट इज व्हाट इज अ नैरो बेल्ट, कि ये नैरो बेल्ट क्या है। तो नैरो बेल्ट वो एरिया है, वो इमेजिनरी एरिया है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। और बाकी पैराग्राफ्स में जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस नहीं किए वो एक्सरसाइज में शामिल हैं। तो अब हम एक्सरसाइज में से क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, एंड द आंसर इज a star seldom finds another star near it because there is a distance of million miles between two stars. Furthermore, the stars travel through a universe so immense that it is a very, very rare event for one star to come near to another. Question number 2. What happened when, according to Sir James Jeans, a wandering star wandering through space came near sun? कि उस वक्त क्या हुआ था जब एक बहुत बड़ा स्टार सूरज के करीब आया। एंड इट्स आंसर इज, जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, सो दिस वेंडरिंग स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। स्टूडेंट्स, इन आंसर्स को आपने नोट करना है और याद भी करना है, इसलिए जब ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं तो इन्हें साथ साथ आपने नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 3. What happened when the wandering star came nearer and nearer? And its answer is, when the wandering star came nearer and nearer, the mountain would rise higher and higher. At last the star formed a mountain so high that we can hardly imagine it. Question number 4. What are planets and how did they come into existence? Planets क्या हैं और ये कैसे मार्स से वजूद में आए? And its answer is, the strong tidal pull between huge wandering star and the sun broke the mountain to pieces. तो जो बड़े स्टार की वजह से सूरज के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ बना था, तो इनकी टाइडल पुल ने इस पहाड़ को तोड़ दिया और ये टुकड़े सूरज के गिर्द घूमने लग गए। ये प्लैनेट्स हैं और उनमें से एक हमारी ज़मीन है। These broken pieces started revolving round the sun. They are planets and our earth is one of them. Question number 5. Why is there no life on the stars? Stars पर life क्यों नहीं है? And its answer is, there is no life on the stars because of their unsuitable temperature. The stars are either extremely hot or cold for life to exist on them. Question number 6. Write a note on the beginning of life on earth. इस ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ, इसके बारे में नोट लिखिए। In the beginning, the life started in simple organisms which were able to reproduce themselves before dying.
Then life became more and more complex, and in the end, it produced human beings. Next question, number 7. Why is the universe of which our earth is part so frightening? Give as many reasons as you can. ये हिस्सा आज हमने पढ़ा है कि ये यूनिवर्स फ्राइटनिंग क्यों है. And its answer is, we find the universe frightening because of its immense distances, great stretches of time, our extreme loneliness, and the littleness of our home in space. Above all else, we cannot find any sign of life anywhere except on our earth. Question number 8. What, in your opinion, should be the condition necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? Do such conditions generally exist? ये क्वेश्चन ये है कि आपकी राय में कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो ज़रूरी हैं ज़िंदगी के वजूद के लिए, और क्या ऐसी कंडीशंस आमतौर पर स्टार्स पर पाई जाती हैं? द आंसर ऑफ दिस लास्ट क्वेश्चन इज, लाइफ नीड सुटेबल फिजिकल कंडीशन फॉर इट्स अपीयरेंस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ विच इज़ टेम्परेचर. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर at which substances can exist in a liquid state, जहाँ पर चीज़ें अपनी liquid state पर पाई जाती हों. In other words, life can appear where the temperature is neither too hot nor too cold. Such conditions rarely exist in the world. जैसे हमने लेसन में भी पढ़ा है कि ऐसी conditions बहुत कम स्टार्स पर हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर इस तरह का हो कि चीज़ें अपनी liquid state पर एग्जिस्ट कर सकें. तो इस वजह से इसके आंसर में हम ये लिखेंगे कि ये रेयर है कि हमें ऐसी कंडीशंस मिल सकें जहाँ पर लाइफ पाई जा सकती हो. दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेसन. हमने इस लेसन को पढ़ा, समझा, उसके क्वेश्चंस देखे. जो एक्सरसाइज में नहीं हैं वो क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए, और जो एक्सरसाइज में शामिल हैं वो क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए. स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर से अपने माइंड में ये बात रखिएगा कि हमने ट्रांसलेशन नहीं करनी है इस बुक से, और बुक 4 से ट्रांसलेशन पेपर में शामिल नहीं होती है. हम जो भी लेसन पढ़ेंगे हमें उसे समझना है, और 2 काम हमें इनमें से करने हैं. एक तो आपको हर वर्ड का सिनोनिम पता होना चाहिए क्योंकि सिनोनिम्स पेपर में शामिल होते हैं, और सेकंड आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स पता होना चाहिए. तो मैंने शुरू से लेकर एंड तक आपको सिनोनिम्स भी बताए हैं और तमाम पॉसिबल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी बताए हैं. आप सब ने इन क्वेश्चंस को तैयार करना है और ख़ुद से फिर इनकी प्रैक्टिस भी करनी है. टिल द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़.